हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बीकॉम ऑनर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स के साथ। यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई। तो इसका आंसर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे एट वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस। यहाँ पे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिप्ट कंसिस्टिंग of two or more taxable supplies of goods or services, or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. उसके बाद what do you mean by mixed supplies? According to section 2 subsection 34, mixed supply means two or more individual supplies of goods or services, or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई। द टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट व्हेन द लाइबिलिटी टू चार्ज जीएसटी arises. First, it also indicates when a supply is deemed to have been made as per the GST Act, CGST and SGST, UGST, that is Union Goods and Service Tax. There are separate provisions for time of supply for goods and time of supply of services. First, these are discussed below. सबसे पहले देखिए, according to section 12 subsection A of the AGST Act 2017, the liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provisions. दूसरा देखिए, according to section 13 subsection 1 of the AGST Act 2000, the liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provisions. दूसरा देखिए, according to section 13 subsection A of the GST Act 2017, the liability to pay tax on services shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provisions of this section. उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन टू नीड्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दो नीड्स आपको बताना है जहाँ पे मेंशन डिटरमिनेटिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, नीड फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई सबसे पहले देखिए, टू डिटरमाइन प्लेस टू व्हिच रेवेन्यू एक्रू। यही सब सप्लाई प्रोविजंस डिटरमाइंस द प्लेस दैट इज टैक्सेबल जुरिडिक्शन व्हेयर द टैक्स शुड रीच। फर्स्ट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस व्हेयर ए ट्रांजेक्शन वेदर ए ट्रांजेक्शन इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। नंबर 2, to determine which tax is to be levied. In other words, the place of supply of goods or services is required to determine whether a supply is subjected to SGST यानी कि State Goods and Service Tax plus CGST Central Goods and Service Tax in each state or union territory, or else would attract IGST यानी कि Integrated Goods and Services Tax if it is an interstate supply. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टडी करने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनडायरेक्ट टैक्स लो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कवर करना इतना आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना होगा आपको। सेक्शन सब सेक्शंस भी यहाँ पे याद रखने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो आई होप को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को, तो बेहतर किसी वीडियो से आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।